Jai Guruji, Shukrana Guruji. Now going to read Light of Divinity from page 65 to 67. These are the satsang which were written in front of Guruji. So now I start. A messenger of God. I was distressed and shattered when my college-going son fell into a depression. For no apparent reason, although we took professional help, my thoughts turned to Guruji, about whom I had heard from my daughter. The family of a friend of my daughter's used to go to him. The friend's mother agreed to introduce us to Guruji. She assumed me that my son would not lose college time. Guruji would take care of everything. I just wanted my son to be well. His losing a year was not a priority. Guruji was extremely kind. During my first meeting with him, once he assured me that things would be okay, I relaxed with Guruji's blessings. My son made slow but steady improvement. Against the doctor's advice, my son appeared for half his exam. The college allowed him to appear for the test after a month. So he obtained good marks. By the grace of God and Guruji, my son recovered within a month. He happily settled down in his hostel and did well in his studies. His depression seems like a bad dream. After meeting Guruji, I feel our family has been blessed and we are secure under his protection. I shall always feel grateful to Guruji for his kind blessings. He is truly a messenger of God. This is a satsang of our devotee. Next satsang. The saving power of satsang. The word satsang means true or good company. It is beneficial listening. In Guruji's Darbar, everyone is a satsang carrier empowered by his will to deliver message to those afflicted by grief. It is not surprising that those who listen to these satsang find that they are being told about problems that they suffer from. Mr. Arun Sehgal, who had never had Guruji Darshan, got admitted to a hospital and came to know that there was a blood clot in his brain. A devotee who knew Sehgal went to see him in the hospital and narrated some stories about Guruji. After this satsang, the doctors found that the clot had moved to a dead portion of his brain. On learning of his miraculous occurrence, the devotee told Sehgal that he had been blessed and that there was no need to worry. The patient, however, was dismissive. He felt that the clot's movement to benign area of his brain was a random occurrence, not a manifestation of Guruji's divine will. The very next day, a worried doctor came in and told Sehgal that there had been a serious development. The whole vein that led to the brain was potholed with clots and an angiography was required. The procedure, the doctor explained, was critical and further treatment would be even more so. The patient and his attendant family became frantic and this critical hour remembered Guruji and prayed for his grace. After Sehgal discharge, the family took to coming to Guruji. Finally, after 3-4 visits, Guruji called Sehgal and asked him to have longer. Guruji then pronounced him okay. And Guruji's words were proven true when Sehgal went back to the hospital and tests showed that he really had been cured. So this was a satsang narrated by Arun Sehgal uncle. So बहुत बहुत शुक्राना Guruji for everything. You know, if you believe in Guruji, definitely you are going to get so many things. If you don't, then also you will get, but maybe it will take time. देखिए, गुरुजी पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गुरुजी ही हमें जो सब कुछ दे सकते हैं. और आई थिंक he can only do the things. So गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. So अभी देखिए हमने 2 सत्संग पढ़े और दोनों में है कि गुरुजी की कृपा जब रहती है, यू नो, गुरुजी चाहे तो he can do anything. So देखिए, जब अंकल ने कहा कि नहीं तो गुरुजी का मिरेकल नहीं है और
ये तो बाय चांस ही ऐसा हो गया होगा। तो देखिए गुरुजी के यहाँ बाय चांस कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट गुरुजीज ब्लेसिंग्स। अगर उनकी ब्लेसिंग्स कहते हैं ना, उनकी मेहर की नज़र अगर पड़ जाए तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। बस उनकी अगर एक नज़र जो है वो बहुत ज़रूरी है, और अगर वो आपके ऊपर नज़र पड़ गई है तो आई थिंक सारी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। और आप बिलीव मी कि मैं भी जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना लाइफ में, जब मुझे लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा क्यों हो गया, क्या बात है, तो उसी वक्त ही कुछ ऐसा होता है कि गुरुजी एकदम आंसर करते हैं। और अगर कई बार लेट लगता है, देखिए कई बार हमें बहुत संगत ऐसे बोलती है कि अरे गुरुजी ने तो हमें आंसर ही नहीं किया, गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, गुरुजी हमारा पता नहीं क्यों नहीं, उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। बट बिलीव मी संगत जी, गुरुजी का ध्यान हर किसी पर है, वो अंग संग है। जैसे आप देखो, आपके घर में कितने लोग होते हैं, कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। तो जब आपकी फैमिली होती है, जब बड़ी फैमिलीज भी, जॉइंट फैमिली भी, देखिए पहले भी रिवाज था, लोग रहते थे जॉइंट फैमिलीज में, अभी भी काफ़ी जॉइंट फैमिलीज हैं। तो जब आप जॉइंट फैमिली में इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है, तो आप सबका ख्याल रखते हो ना, इसका भी रखते हो, हर छोटी छोटी चीज़ों का, स्पेशली बच्चों का बहुत ध्यान रखता है सबको। तो ऐसे ही तो ये गुरुजी जो हैं, ये उनका एक परिवार है, उनका घर है, क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि उत्पन्न की है। जब उन्होंने उत्पन्न किया है, उन्होंने सब कुछ किया है, तो वो क्यों नहीं ध्यान रखेंगे। वो हमेशा ध्यान रखते हैं, आपके हर पल है, अंग संग है। बस उनको उस फेथ के साथ, उस श्रद्धा के साथ, उस पेशेंस के साथ आपने उनको याद रखना है। एंड सी मतलब मिरेकल तो एक होता है कि अलग बात कहना है, बट आई थिंक यू कैन सी हिज, यू कैन फील हिज ब्लेसिंग्स। इनफैक्ट आप उनकी ब्लेसिंग्स को फील करके देखिए, एंड ही इज़ ऑल योर्स। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।